Assalamu alaikum, everyone. You are watching the Metrics show on Global Developers Network. Global Developers Network is a community-based network of developers. It consists of marketers, content creators, freelancers as well. So the idea behind this community is to unify the existing groups, developer-focused groups in Pakistan, and to unify them on a single platform where they can share ideas, they can network and everything. So basically, this is an initiative of Tech Pakistan, which is one of the leading technology platforms in Pakistan, and it is supported by CXO Global Forum, which is a knowledge sharing and socializing and knowledge sharing and networking platform. It's a forum basically for the C-level executives and officers from Pakistan and all over the world. So today's topic is the gig economy and freelancing in Pakistan. We have a few guests from diverse backgrounds. Some of them are from the freelancing industry. Some of them are from the corporate sector, as well as uh, they are gig workers as well. So I'll start with Junaid. Junaid, would you like to give a short introduction, and then we'll start with the questions. Okay, so by profession, I'm basically a freelancer, and I've been working as a freelancer since the late 2000s. Like I started in 2009, and before that, I did some small projects in my college, like their website. I designed that, and when I graduated, I was hired by a consultancy. I made their website, designed their print collateral, logos, and all that kind of stuff. And after that, they referred me to another client, and the whole chain just started from there. I started getting referrals and made some clients outside of Pakistan as well. So I did some good business in those days. Then I worked as a 3D animator as well for this construction company called Zamin Group. Most of you might have heard about it. So I worked for them for about 3 or 4 months. It was a huge project. And after that, I kept on working on and off on small projects and did some big ones too, which includes one for the Pakistan Navy as well, HBL, Axo Nobel, and other names like that. So that's my brief introduction in a few words. If I go on and on, it's going to take a lot of time, so I just Okay. summarize everything. No, no, that's just okay. You've been part of the freelancing industry, as you just mentioned, the community since quite long now. What, how do you see the evolution of freelancing in Pakistan? We have come a long way, right? Yeah. People didn't in 2009. People didn't knew about freelancing, even in No. the urban areas like Karachi, Lahore, and Islamabad. So, what are your views about that? Well, freelancing and earning online was much of a mystery back then. People thought that it's you just join some website and you start getting money into your bank account, which is of course not the case. It doesn't even happen right now. So that's what people perceived about it. But in those days, these freelancing websites like Upwork and Elance and Otis, they didn't exist basically. So we had freelancer.com, and if I'm not wrong, there used to be Odesk. It got merged with Elance and then acquired or something. Something happened like later on. So in those days, we just had those three major websites. Fiverr didn't exist at that time. So a lot of people did sign up over there, and the skills that they had were solid at that time because uh, I believe people in those days were more focused on what they were learning. They were interested, they were goal oriented. There weren't as many shortcut seekers as there are now because people think it's too easy these days since technology has become more accessible. So freelancing in those days was quite different. We had more dedicated and honest people in that era, basically. And now we have a lot of people. There's an abundance of freelancers, but I would say there's more quantity as compared to quality. We have good people too, but the numbers, if you compare percentage, it's quite low. So we need some improvement in that area these days. Would you like to add anything to that, Shajid? So, yes, I think he's absolutely right. We definitely need to improve the quality of
the developers and also the freelancers that are adding value to the economy. We definitely need to work on this, and he's right that the quality is more important than quantity. So Junaid, you told me that you recently attended a meeting uh, at the State Bank of Pakistan, which was related to freelancers. So, uh, Yes. considering that meeting, what are the major problems you think the freelancers are facing right now? And do you have any advice for the freelancing community and for the government as well? Yes, actually, that meeting was based on the problems that freelancers are facing these days. Most likely, it was based on the absence of PayPal. We don't have PayPal over here, so freelancers are complaining about receiving payments, and most of them are Payoneer based freelancers. And when they receive cash on Payoneer, they have deductions, and the card gets lost, and all kind of stuff like that. And the issues with PayPal are that everybody uses PayPal in the US. So if you sign up a client abroad, and I'm not talking about working on Fiverr or other freelancing websites. If you directly sign up a client in the US, they would prefer to pay you using PayPal. But we don't have that over here. So that was the main focus of this discussion. And also, we discussed the problems that freelancers basically, they face when they try to open a bank account, because most of them they're in their early 20s. They're just graduates, they're students. They don't know how the banking system works, how to file taxes, what's an NTN, what's a sole proprietor, how to form a company. They have no idea about these things, and then they think that opening an account is like something impossible. They have to do a lot of work to get an account open, which is not the case. Because when I opened my account, I just made my NTN certificate and signed up signed up as a tax filer, and then I just opened an account. It was that simple. So I think what's needed right now is the government's involvement. They should run infomercials on their Facebook pages. They should tell youngsters how the whole taxation system works, how the whole banking system works, how they can sign up as a taxpayer, how they can get their NTN and then open the bank account. Because even these days on certain groups, I see questions from newbies. They're still confused about opening a bank account. Although there are freelancer bank accounts that have evolved into something simpler to sign up for after we had that conference, because that was one of the recommendations we made, to make the account opening process much simpler. So we have those accounts, but then again, that account has certain limitations. The freelancer account, it doesn't have any tax certificate. I mean, you cannot file your taxes with that account because you don't have a tax number. So just summing it up, I think the government should tell people how to open an account, how taxes are filed. And if that kind of awareness is created, it's going to become much more simple for new entrants to actually form the legal basis of their business and get registered with the FBR. Right, right. Your points are very well taken. I think you're just you simply identified the major problems which we are facing right now as a community. Osama has just joined us. Osama, I would come to you right after Junaid. Junaid, this is my last question to you. Then I'll let you leave, so you may rest and get well soon. Thank you. Do you think the introduction of local freelancing marketplaces will improve the situation for the freelancing community in the local community, the local freelancers? As you know, many of them are not able to understand the environment of the global freelancing marketplaces, and they are not able to do as they tend to. So, what's your take on that? Yes, it can be looked at both ways. So if you start a local marketplace, you have to have that level of regulation that international marketplaces have. For example, they have dispute resolution, they have deadlines, they have a whole support crew that actually looks after the whole transaction process, the freelancers working, the client signing up. So if we have that kind of regulation going on, then you can build trust amongst clients as well. Because if you start a network, you'll get 5,000 people joining in, 5,000 freelancers basically. But the question comes, are the clients going to join in? Would they be placing their trust in that kind of a network, especially if it's local? And also considering the fact that local talent over here, they're basically, well, most of them, they're shortcut seekers.
So they don't spend time on learning anything. They just want to make money quick, like join a network and then expect something to, come in their bank account. So if that mindset changes, if there's that level of dedication, once we raise the quality of our freelancers, the work they provide, in that case, we can think about starting a network that is focused on local freelancers. So if you look at the international networks, for example, there's TopTal. And TopTal only allows you to sign up if you have a perfect portfolio, you have like a proven track record. And if we create a network like that, then we have to have a strong vetting process. We have to look through the portfolios, what people have done, what kind of projects they've done, the portfolios, like how long they've been in the industry, and then that platform can be marketed to potential clients, and then they can join in. So, I mean, the way I get work is through Facebook. Basically, I've never joined any network. I've been just getting clients from Facebook groups, my personal networks, connections, word of mouth referrals, and that's been my primary source of getting work. So if I was on a local network, I think it would have been, somewhat easier to get work. So yeah, with these recommendations, a local network can work, but it's going to require a lot of work, like a lot of effort to put in. So you've never tried joining these global freelancing marketplaces, or it's just that you were doing good on the basis of PR and everything all these years. Well, all these years, I think whatever I've been doing on my own on Facebook with my personal connections, it was enough for me. So one of the main reasons for not joining a freelancing network is that this may be my personal opinion. It might differ from others, but in my opinion, the projects over there were really, low cost, and they were expecting a lot of work for the price that they were paying. And then there's the communication problem. For example, on Fiverr, you cannot communicate or talk to a client like I'm talking to you right now. Even if you give your phone number or some kind of a contact detail, your account gets banned. So how are you going to understand the project if you cannot even communicate with the client? Fiverr has to come up with some kind of a way, like a voice chat or something with the client. So these are the limitations that you have on those networks. But when you're working for someone, like I was working, I'm going to just give you the most recent example. Like I was working for Pakistan Navy. They just called me. I went to Karachi in their office and had a meeting with the officials, Navy officials at the boardroom. So that was a meeting where we were face to face. We discussed what we had to do. There were no communication problems. I went back, finished the project, and delivered it on time. But if you're on a network, like on Upwork, on Fiverr, that's not possible. There's a lot of limitations. But again, it works really well for most people, but it's just not for me. That makes sense. Junaid, I would, not take very long. You can, rest, or you can be here for some time. It's totally up Okay. to you now. Okay. Right. Shajid, my next question is to you. Which freelancing platform do you recommend to the aspiring freelancers, and why do you prefer that? Hmm. So everyone these days wants to do freelancing, but there are certain platforms that are available. Uh, the most recommended platform is Fiverr these days because it is easier to sign up. It is easier to create account there and just publish your gigs and get started. As compared to other platforms that are like freelancer.com or upwork.com. On Upwork, you cannot, create an account until unless you prove yourself that you are good enough to have freelancing account. On freelancer.com, you can go ahead and create an account, but the problem there is that you need to place proposals on the jobs, and then you might get the project. So but in the opposite, in the Fiverr, you can just publish your gigs and clients will come to you. So I recommend that uh, Fiverr is for newbies and it is highly recommended. I also want to add something to what Junaid said, that PayPal is the problem. So PayPal is not the problem for freelancers, at least in Pakistan, especially if they want to get payments from USA. There is an alternative company that is also from PayPal, that is called Transfer Zoom. wise. Zoom. So Trans- Zoom is okay, Zoom. XOOM. So whenever you want to get payments from US to in Pakistan, you can use Zoom.
It is also a company of PayPal, and you can get your payments. However, PayPal is the problem for startups and e-commerce, business who wants to, get their, payments from clients who want to purchase their products. I don't think so that PayPal is the problem for freelancers at all. We don't need that. And one thing is for sure is that new freelancers are facing problems in creating in opening their bank account. So that is the genuine problem, and I think slowly State Bank and local banks are trying to, realize that freelancing is a real thing, and these people can also earn huge for the country, and they should be, there should be some dedicated accounts for them. So that's the plus point. So recently you have seen that Mizan Bank has announced that there is a special freelancers account where, people can visit and open their uh, accounts. But So yes. but sorry to interrupt you, but I've been told that it's just as it's just the same as It's the a normal marketing account. stunt. Yeah, it's a It's marketing so gimmick. okay. So, So, but that's it. Yes. it's just for the sake of getting your name around and publicity. I Mm-hmm. don't think Mm-hmm. I've observed and seen people talking about it, and they are telling me that they're talking about it, that it's not something special or something exclusively for the freelancers. It's just it's just the name. It's just the name. See, Uh, banks only wants to open your account whenever you show money to them. So, in 2014, when I was trying to open a bank account in a local bank, they said how much money you will, submit whenever you will open your account. that's So the I first said this question. amount. Yeah, that's the first question they ask. So if you are a freelancer and if you are earning good, then try to, have some cash in your hands and go to the bank, and they will treat you like someone is, uh, Exactly. so I get your the point. first question they will ask how much money you will submit as initial deposit, and for how much time you will keep that money in your bank account. So if you say I will submit like 500,000 rupees, then definitely they are going to do. Even I can tell you, uh, when you submit some amount, rather than you going to the bank, they will send you their person to your office or to your home or to your location that please sign this stuff, we need your time. So how this is how much they treat you whenever you show them that you have money. So one thing is for sure, there will be no such benefit until unless you show them that you are earning good and you have some money. Hmm. So that's my point. That if even if I go to a bank to open a normal account, and they ask me for if I'm working somewhere or not, if I have a job or not, if it's a, if it would be a salary account or a personal account. So it's the same thing, until and unless they're not providing something special for the freelancer. At least they should not claim something like that on Mm-hmm. this kind of a level, right? So let me come to you, Osama. Please give a brief introduction of yourself, uh, so we can start going. Yes, Assalamu alaikum. I hope you guys are hearing me clearly. Am I clear? A bit of distortion, but we can hear you. Oh, okay. So just give me a minute. Maybe it's because of Shajil, my network. I forgot to tell you to introduce yourself to the community. No Please problem. We do can. not. No problem. No No, problem. just until he fixes his mic, you can, if you want to, or afterwards. Okay. Yeah. Osama, are you Afterward, good? I think Sama is good enough. Yeah, that depends. Can you guys hear me? Yeah, now we Yes. can. Okay. Okay. So, Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. Uh, so
in a nutshell, I design brands and digital products. So when you go into more detail, I have some additional experience in product management and content creation. And my startup background is like I'm currently working on two startups right now. One is Travel App, which is a platform that connects business travelers to relevant networking opportunities while they're on their travel journey. But due to COVID-19, we decided to, pause it, and we're looking forward to assess the situation of the travel industry, and then we will resume operations once the time is right. The second startup is called Zing, which is a community-powered delivery app. So I'm acting as the head of product design and management there. So yeah, that's about me. Okay, so Osama, do you, do you do you think freelancing can be relied upon as an individual who has responsibilities, like he has to run the family and everything, and he can, rely upon freelancing as the main source of income? Well, in short, I think yes, definitely. I've seen a couple of freelancers, full-time freelancers. There's a difference between part-time and full-time freelancers. So I've seen full-time freelancers. They have their responsibilities. Some are married. They have their family to take care of, but they're running their whole, paying their bills and running everything just from that income from their freelance projects. So, but I think it really depends on the time you invest when it comes to freelancing, because I don't recommend to new freelancers, who are new to this field. I don't recommend them to rely completely upon freelancing to support their family or support gas money or anything. But first of all, the question is why would anyone turn to freelancing? Well, uh, I would add a comment here that I think it's because of the flexibility, and it definitely pays good. We all know, and of course, when you're a freelancer, you have the freedom to work on your own terms. Well, that depends if the client is not a pain in the, you know what I mean. So uh, well, and I believe, because I'm from a creative background, I believe freelancing is very, very suitable, very perfect for creative professionals, because they need creative freedom. uh, you've seen people who are designers, content writers, they don't stick to one company that long. Why? Because they need their creative freedom. At one point, they do feel that I need some space. They, I need a break. I need a change. They leave the company. Either they join another company, that fits their aligns with their vision, or they start their own company. So, coming back to your question, um, I think it needs time to depend on freelancing, uh, solely depend on freelancing, because it takes time, it takes patience, it takes a lot of experience, because when you are experienced in freelancing, and not just, I'm not talking about the sales experience, I'm talking about the freelancing experience, because freelancing, I believe, is a whole different field. It's an art. Like, you need to know how to do freelancing. It's not that easy. Okay, there's a project, okay, I can do that, I can do this for this much. No, it there are a lot of factors involved. I believe you need a good portfolio. I believe you need a good pricing structure. You need to have a very, very justifying price for your services. I think you need a good working process. A lot of freelancers I've met, they lack a good working process. They don't know uh, what sets of deliverables should be, and how they can benefit uh, from a project. They just do the project just for the money. But I believe true freelancers, experienced freelancers, don't just go for the money. They look for a lot of things.
So yeah, my advice to new freelancers would be, uh, you don't go for freelancing since the start. Of course, that's solely based on my own personal opinion. Uh, but you go for you go for a company, you work for a company, you gain some experience, you see how companies work, how management work, how things work around you. Because when you're a freelancer, you're actually you're a walking company. You need to manage a lot of stuff from your own end. So you're actually essentially running a business when you're a freelancer. So this is why I would recommend, like, go for a job, and with the job you do some part-time freelancing projects, and when the time is right, go for a full-time freelance phase. Or well, this is really pretty common in Pakistan. From freelancers, they go to start a new agency. So Right. that's what I think. That's what really depends. Now, there are a lot of things I've said: good portfolio, working process, pricing. If you're on the right path, I think yes. When you can certainly reach a point where you can solely depend on freelancing. So yes, freelancing can be relied upon, but takes time and experience, and especially in the era of remote work. We know remote work is the future, so this is the time. So basically, in a nutshell, you're saying that it's not for the beginners, right? Uh, No, People no. who are just starting out, they should not aim for they should not look to be, if they have responsibilities, if they have मी a वीडियो को family, बंद करें, वीडियो बंद कर दो यार, if मैं they have पीएचडी चला रहा था. a family to support, then they have to get some experience. Then they can completely rely on freelancing. That's your point, right? Definitely, that's my opinion. Okay, Osama, are you there? Uh, तुम्हारी बारी आई तो तुम गायब हो गए यार. अजीब तुमने सिस्टम किया हुआ. और वीडियो बंद कर दो, वो ओवरलैप हो रही है आवाज. ओसामा, कैन यू हेयर मी? ओके सर, ओके. Yes, या can सर. you guys hear me? No, no, there are two Osamas. Muhammad, Muhammad, Okay, can okay. you uh, can you hear me now, Muhammad? आवाज आ रही है? यस सर, आई कैन हियर यू. अच्छा, मोहम्मद, तुम क्या रिकमेंड करते हो उन फ्रीलांसर्स के लिए जो जो हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इन मार्केट प्लेसेस पे, जो बहुत मशहूर हमारे यहाँ एक मार्केट प्लेसेस हैं, जो जब भी कोई फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहा होता है उसको ये नहीं पता कि मैं लोकल प्रोजेक्ट्स भी उठा सकता हूँ, या मैं लोकल अपनी नेटवर्किंग की बेस पे भी, जैसे जुनेद भाई ने हमसे शेयर किया कि ही इज वर्किंग ऑन फेसबुक ओनली, ही इज गेटिंग लीड्स फ्रॉम फेसबुक. He doesn't freelance on the marketplaces. So, what do you recommend for those people जिनसे who are not good enough? ये तो नहीं कहना चाहिए वरना मेरे पीछे आ जाएंगे सब कि they are not good enough, लेकिन who are not able to perform well on these marketplaces, उनके लिए क्या होना चाहिए? और अपना इंट्रोडक्शन भी ओके, दो सो please. वेल, सो थैंक यू सो मच बद्र फॉर इनवाइटिंग मी. मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक बीएससीएस का स्टूडेंट हूँ, और मैं काफ़ी अरसे से काफ़ी चीज़ों में जो है वो इंटरेक्शन करने की कोशिश करता, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंटर्नशिप्स एंड डेवलपमेंट. सो बेसिकली देन आई फाउंड माय पाथ एज अ डेवलपर, और अब मैं एक जेंगो डेवलपर हूँ, और अपने एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ एज एन एमटेक हब, जो कि 2019 में मैंने फॉर्म किया था. सो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. एमटेक हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, एंड वी सपोर्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू बिल्ड द प्रोडक्ट्स एंड टू यूज, और कम्युनिटी को हम ये गाइड करते हैं कि आप वो प्रोडक्ट्स को यूज करें. सो इसके रिलेटेड हम कुछ स्टार्टअप्स इसके अंदर ही लॉन्च करते हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही बनाते हैं. तो माय मेन फोकस इज टू सपोर्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. अब आते हैं आपके सवाल की तरफ. तो जहाँ तक आपने बताया है कि स्टार्टअप में, सॉरी, फ्रीलांस मार्केट्स में आप काम कैसे नहीं कर सकते, तो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा अपने बैकग्राउंड की तरफ से. तो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता चलूँ. 2016 के अंदर मैंने जो है वो फाइबर पर प्रोफाइल बनाई थी.
उस वक्त काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी हमारे पास यूट्यूब पर अवेलेबल थे, और शजील भाई के भी कुछ ट्यूटोरियल्स जो मैंने देखे, तो उससे मैंने प्रोफाइल्स वगैरह फाइवर पर बनाई और काम शुरू किया। लेकिन ऐसा चाहिए कि आपने जैसे बात की कि कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो सिंपली थिंक कि मैं भी परफॉर्म नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ का टाइम स्टार्ट हो गया। तो यूनिवर्सिटी टाइम जो स्पैम होता है ना एक स्टूडेंट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, आपके नेटवर्क्स बन रहे होते हैं, आपको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा-सा बहुत एक्सपोज़र मिल जाता है। दो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड अगर नहीं भी करती, तो आपके लिंक्स बिल्डिंग में ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, और आपको ऑटोमैटिकली कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। सो वहाँ से ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी आईटी जो कंपनी है उसको स्टार्ट किया। उसके बाद ये हुआ कि मुझे सबसे पहला जो फ़ोकस था वो ये था कि मैं इसके लिए कैपिटल कहाँ से रेज़ करूँ। सो जो कैपिटल रेज़ करने का जब मरहला आया, तो मुझे पता चला कि हम फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर अगर परफ़ॉर्म करने जाएँगे अब, जो मेरी टीम थी 4 लोगों की, तो हमने सोचा कि हम जाएँगे ज़रूर, लेकिन हम उस पर इतनी जल्दी परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें टाइम लगना है। सो हमने क्या किया, हमने लोकल प्रोजेक्ट्स को फ़ोकस किया। अब ये मैं अपनी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लियर हो जाए। उसमें हमने ये किया कि हमने लोकल प्रोजेक्ट्स इसमें उठाए कि अपने कनेक्शन से, अपने टीचर से, उसके अलावा हमने कुछ फ्री की साइट्स बिल्ड करके दी। लेट्स सपोज़ अगर मैं एज़ अ वेब डेवलपर, जेंगो वेब डेवलपर काम कर रहा था, तो मैंने कुछ जो अपने कनेक्शन थे उनको फ्री साइट बना के दी, जिनको ई-कॉमर्स स्टोर भी थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। इससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा-सा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ। उसके बाद हमने सीखा कि फ़ेसबुक से आप किस तरह ऑर्डर्स उठाते हैं। हमने क्लाइंट्स को मैनेज किया और वहाँ से ऑर्डर्स निकाले। तो बेसिक पॉइंट इज़ ये कि अगर आप फाइवर या अपवर पर परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि देयर आर बिग एजेंसीज एंड टॉप रेटेड सेलर्स आर अवेलेबल, जिसका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आपको इतना प्रेफर नहीं करेगा, एक बड़ी प्रोफाइल को ही प्रेफर करेगा। तो आपके लिए सजेशन ये है, अगर आप एज अ स्टार्टअप स्टार्ट लेना चाहते हैं और अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपने लोकल नेटवर्क्स को पहले बढ़ाएँ, और उसके अलावा अपने लोकल नेटवर्क्स को ही ग्रो करते हुए क्लाइंट्स लें। जैसे कि अब भाई ने बताया कि उसामा भाई ने बताया कि वो ब्रांडिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर हम भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम ब्रांड्स को लोकल I think Osama is को lag. पहले रीच करें, उसके बाद आप जो है वो अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से वो पोर्टफोलियो करके Osama, you are आप lagging. में बहुत थोड़ी-सी लैग हो रहे हो. मार्जिन ले सकते हैं। Osama, you are lagging. बहुत लैग हो रहे हो तुम. वापस ज्वाइन करो, मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन करो. So Shajil, I'm coming to you for the next question. Uh, what are the major do's and don'ts जो आप अपने experience के हिसाब से you will recommend it for the freelancers जो हमारी पाकिस्तान के local ecosystem में freelancers हैं, रिगार्डलेस के वो किस स्टेज पे हो, बिगनर हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ तो मेजर चीजें आपने लर्न की होंगी ना अपने एक्सपीरियंस में कि यार ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, ये कर नहीं करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन, यू वॉन्ट बी एबल टू Hmm. सर्वाइव. Hmm. So the do's are basically if you are starting out, then definitely try to build up your portfolio. So the most important thing that I missed in my whole career in the beginning, if अगर मैंने स्टार्ट में उस पे ज़्यादा फोकस किया होता तो उससे डबल हो सकता मैं मतलब अपने कैरियर के अंदर. So people don't focus on creating their portfolio. So I highly recommend कि you start spending your time in creating portfolio. Though so they don't understand कि शायद हमें जॉब चाहिए होगी, जॉब मिलेगी तो फिर ही पोर्टफोलियो बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आप साइड प्रोजेक्ट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने कुछ आइडियाज़ को भी कन्वर्ट करके आप बेसिकली पोर्टफोलियो बना सकते हैं. दिस इज़ समथिंग कि डूज़ में आ गया. फिर उसके बाद कभी भी क्लाइंट को जो है ना, डोंट्स में अगर बात करें तो कभी भी अपने क्लाइंट को आउटसाइड प्लेटफॉर्म ना लेके आएं अगर वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है. ट्राई टू बिल्ड अप योर रेपुटेशन ऑन ऑन प्लेटफॉर्म्स. सो अगर आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है तो आपकी एक रिकग्निशन हो सकती है. आप बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है तो आपको हेल्प हो जाएगी उसको करने, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सम रेपुटेशन. और मैंने भी ये गलती, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो
आउटसाइड कह लें कि प्लेटफॉर्म भी काम किया है, डायरेक्टली काम कर लिया है मैंने उनके साथ। तो वो वाला जो नंबर है ना, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नज़र नहीं आता। तो जब नज़र नहीं आएगा तो वो वेरीफाइबल भी नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है तो रेपुटेशन में भी वो फ़र्क पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे डोंट्स में और तो कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं जो ठीक है, मेरे ठीक हो माइंड में गया। अभी आ रही जरूरी हैं। नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप पूरी एक जो है वो कोई पैराग्राफ बताएं। ऐसा कोई सीन नहीं है। उसामा, what are the core differences between a freelancer and a gig worker? यहाँ पे मैंने देखा है लोग जो है वो कंफ्यूज करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पता है दोनों के बीच में। तो वुड यू लाइक टू मेरी जो ऑडियंस है, छोटी मोटी 2-3 हज़ार लोग जो मुझे देखते हैं, मेरी कम्युनिटी में लोग हैं, उनको आप डिफरेंशिएट कर दो कि यार वो हु इज अ गिग वर्कर एंड हु इज अ फ्रीलांसर एंड व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस? Yes, Babar, ये जो है ना, this is a very interesting question because I honestly believe that a lot of people have different opinions in this matter. I believe, in my personal opinion, I believe there's a very blurred line between them. Uh, when it comes to freelancers, I think freelancers को self-employed कहते हैं लोग. They are self-employed. They work on their own terms. They make their rules, and they set their pricing, right? And वो खुद अपने clients choose करते हैं, right? So freelancers के पास लेकिन और भी बहुत सारी responsibilities होती हैं. Like they're responsible for their own marketing. They're responsible for the billing, communication, management, and etc. So there are a lot of things. So freelancers essentially work like a company, right? So there are a lot of freelancers. So freelancer is just like basically, अगर मैं ये बोलूँगा, hey, I know how to do this. You give me this much, and I'll do this for you. So this is, I believe, what freelancers are. When it comes to gig workers, there's a little difference between gig worker and freelancers. I think gig workers are like, there are temporary, short-term contract workers. Like they're provided random jobs from a company, right? And the marketing and all of that's done by the company. Gig workers don't do that, and they just get the job done and get paid for it. So mostly आजकल के अगर क्या कहते हैं, हम किसी से भी आप पूछोगे कि गिग वर्क क्या है, तो मोस्टली लोग जो है वो ऑनलाइन गिग प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट करते हैं. अच्छा, ये एक डिबेटेबल एक वो है, एज यू मेंशन्ड अर्लियर, कि Yes, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इस पे, exactly. गिग वर्कर और फ्रीलांस. ठीक है. Yes, exactly. And मैं यही बता रहा था कि मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी गिग वर्कर्स कहा जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल फाइवर तो कहता ही गिग्स क्रिएट करते हैं लोग. गिग्स. So the gig workers work for other businesses for their clients. Like for example, मैं बहुत ही अच्छी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा. Like for example, an Uber driver. Uber driver is responsible for providing a car, paying for their gas, maintaining the car, and passengers को drive करना destinations. ठीक है, but the driver does not get to decide their rate. The rate is decided by the company through their algorithm, right? And they don't decide who they pick up, right? That's decided by the company. And how the company markets their services, drivers don't, they don't give 2 cents about it. So I believe freelancing and gig working is interchangeable terms, but this short sentence would explain it really better. That I believe that not all gig workers are freelancers, uh, but all freelancers are gig workers, because freelancers essentially run their own business, while gig That's workers nicely provide service for a company and their clients. So that's the definition, in my opinion. that's nicely put. I hope it clears confusion for the most of the people who are watching right now. Shajil, how do you think in the Hmm.
the government and the private sector, can play an important role to normalize freelancing in Pakistan. क्योंकि यहाँ पे तो एक ऐसा वो बना हुआ है कि अगर मैं अपनी रेज्यूमे पे लिख देता हूँ ना कि भाई मैंने 2019 से लेके 20 तक मैंने जो है वो कुछ नहीं किया, मैंने फ्रीलांसिंग की, इट्स समथिंग जो बहुत बुरी नजर से देखा जाता है हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। आई डोंट नो व्हाई। मोस्टली ये है, बहुत कम है कंपनीज जो जो अंडरस्टैंड और रियलाइज करती हैं कि हाँ भाई ये फारिग नहीं बैठा हुआ था, ये कुछ कर रहा था घर पे बैठ के। लेकिन उसके बारे में क्या बोलोगे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट को किन किन जगहों पे रियलाइज करना चाहिए कि यार फ्रीलांसिंग इज आल्सो अ प्रोफेशन एंड दे शुड encourage it, in my opinion. What do you think? So let's talk one by one about them. First of all, let's talk about government. So government is playing huge role in this regard to empower freelancers and also recognize freelancing. If you talk about the initiatives, there are many initiatives that the government has taken. Um, First यार of all, लेकिन I would like to talk. ग्राउंड पे Mhm, जो है वो, mhm, मुझे पता है यू आर एसोसिएटेड विद ई रोजगार प्रोग्राम, उससे बहुत फर्क mhm, पड़ा है, आई नो। mhm, लेकिन mhm, उसके अलावा यू नीड टू एम्पावर देम एज वेल ना। आप स्किल सिखा दी आपने, मुझे स्किल सिखा दी, मुझे mhm, अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई, मुझे वर्डप्रेस आ गया, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गई। आपको जाके वहां पे अपनी सर्विसेज ऑफर किस तरह करनी है, उस एनवायरनमेंट में सस्टेन किस तरह करना है, ये स्किल तो आपको कोई नहीं सिखा रहा। अब ये खुद सीखेगा वो बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है, जिसको नहीं पता। he doesn't have any idea of No, Fiverr, he doesn't have any idea of no. The thing is, these initiate. things are also being teached. These things are also being teached at eRozgar, if you talk about it. At eRozgar, we teach them how to freelance, how to use Fiverr, how to use Upwork, how to use freelancer.com, how to use people per hour, and on top of that we teach them skills. So this is one major thing that I should clear. I think uh, it was only in Punjab, by the way, but since it was doing good, government has expanded it to all over Pakistan, and DG now you skills, see. DG skills was on a national level Hmm, from the very beginning. I yes, was from I the very I beginning it myself was, yes. I Hmm. myself was a student of DG skills. I So completed almost एवरी hmm, सब्जेक्ट so और hmm, सारे कोर्सेज मैंने किए। इट वाज वंडरफुल। और वहाँ पे एक चीज ये थी अच्छी कि वहाँ पे जो ट्रेनर्स थे, लाइक साद हामिद या आप हिशाम सरवर की बात करें, तो दे वर वेरी अप्रोचेबल। मतलब आप उनसे कोई चीज वीज पूछो, और उन्होंने जो अपनी कम्युनिटीज एक क्रिएट कर दी हैं इकोसिस्टम में, आई थिंक उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ही क्रिएट हो रहा है। जैसे तुम भी जो है अब यू आर वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर ओन कम्युनिटी, जिसमें यू आर प्रीचिंग hmm. फ्रीलांसिंग। ये जो आपका यूट्यूब का चैनल है, यू आर डूइंग वंडरफुल माशाल्लाह। लेकिन अभी भी जो है ना वो गैप नजर आ रहा है, तो उस गैप को नहीं नहीं, किस बात तरह बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट। है। बात बिल्कुल ठीक है। सो मैं गवर्नमेंट का बता रहा था, अभी एनएफटीपी भी स्टार्ट किया है, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि टेफ्टा, ईरो का ही टेफ्टा है, के ई साथ। रोजगार की टीम ने। नहीं, वो टेप्टा वाला डिफरेंट है। सो अच्छा। इज टोटली डिफरेंट। टेप्टा वाला तीसरा है, फोर्थ नंबर पे डिजी स्किल्स है। जो चार इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट फंड कर रही है बकायदा, मिलियंस ऑफ रुपीस, जिसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपने बेसिकली नए जो ग्रेजुएट्स हैं या जो नए आने वाले लोग हैं उनको फ्रीलांसिंग सिखानी है, और लगे हुए हैं। और of people are becoming freelancing through digi skills and combined this e-rozgar and nftp program. तो एक तो ये, तीसरे नंबर पे, अभी 5 नंबर पे एक और काम गवर्नमेंट करने जा रही है, को वर्किंग स्पेसिस ओपन कर रही है। सो ई अर्न के नाम से ई रोजगार डिपार्टमेंट ही ऑल ओवर पंजाब को वर्किंग स्पेसिस ओपन कर रहा है, और इन ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। सो पंजाब में जब ये वेरीफाई हो जाएगा, फिर ये शायद पाकिस्तान लेवल पे इसको एक्सपेंड करेंगे। सो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जो फ्रीलांसर हायर किए हैं फ्रीलांसिंग टीच करने के लिए, उनकी सैलरीज हैं, लैब मैनेजर्स हैं, एसएनईज हैं, इक्विपमेंट है, लैपटॉप्स हैं, लैब्स हैं। तो मैं ये कहूँगा। दूसरे नंबर पे प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात करें, तो वहाँ पर
इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपनी सीवी पे लेके जाएं जी मैंने 3 साल काम किया है, मैंने 1.5 करोड़ रुपया जी कमाया है, फ्रीलांसिंग किया, और आप जाके उनको अगर जॉब के लिए अपनी सीवी पे लेके जाओगे, वो कहेंगे यार वी डोंट रिकॉग्नाइज यू, कि आपका तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। अच्छा चलो आपने काम किया है, आपने इतने पैसे कमाए हैं, आपने इतनी जॉब्स की हैं, जाओ जाकर उनसे ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आओ। भले वो आप आप टॉप लेके रेटेड नहीं सेलर आएंगे हो, भले जी। आप टॉप आप रेटेड बेशक सेलर। टॉप रेटेड, बेशक आप टॉप रेटेड हैं, बेशक आप टॉप रेटेड प्लस हैं, ठीक है, वो नहीं उसको रिकग्नाइज करेंगे। दूसरे नंबर पे दे डोंट लाइक फ्रीलांसर्स बाय द वे। आप अगर जाकर उनको कहेंगे ना आई एम फ्रीलांसर और मैं आपके पास जॉब भी करना चाहता हूँ, दे विल इमिडिएटली रिजेक्ट यू, बिकॉज दे डोंट वांट के कोई फ्रीलांसर आकर उनकी कंपनी में जॉब करे, बिकॉज अच्छा दे वांट ये समवन। जी जी, कंप्लीट करो, तुम कंप्लीट करो। दे वांट समवन के जो 9 to 5 उनके पास रहे, और अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े, फॉर एग्जांपल 5 से अबव भी उसको टाइम देना पड़े, तो वो दे सके। और जो फ्रीलांसर माइंडसेट होता है ना, वो तो भाई फ्रीलांसर जो होता है ना, तो ये कहेगा भाई मेरा तो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे 5 बजे छुट्टी चाहिए, अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते तो मुझे फारिग करें। जितनी सैलरी आपने महीने बाद देनी है मैं तो एक दिन में कमा लूंगा, मैं फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट अगर उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रीलांसर उनकी सुनता नहीं है। इस वजह से ना आपकी लोकल मार्केट जो है फ्रीलांसर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, और मैनेज अच्छा, करना भी मैंने देखा लाजमी है, है। वो दे हम्म सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने देखा है स्टार्टअप्स जो हैं, जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, जो यहीं से बाहर वाले नहीं, जो बाहर से जो है पल फूल के आ जाते हैं एकदम से, जो यहाँ के हम्म लोकली होम ग्रोन स्टार्टअप्स हैं, वो एक्चुअली फ्रीलांसर्स को जो है ना वो हायर कर लेते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनकी फ्रीलांसिंग से, क्योंकि वो खुद उस बैकग्राउंड से गुजर के आ रहे होते हैं, उनके को फाउंडर्स या उनकी टीम में से कोई लोग, तो उनको पता होता है कि यार फ्रीलांसिंग इज अ प्रोफेशन, और लेट हिम डू द फ्रीलांसिंग एज लॉन्ग एज वो स्टार्टअप में जो है अपना टाइम और अपना जो है इनपुट दे रहा है पूरी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म होनी चाहिए यार, अगर वो घर जाके फ्रीलांसिंग जी कर रहा है या वो अपने पैसे बिल्कुल। कमा रहा है। द नेक्स्ट स्टेप टू फ्रीलांसिंग इज इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। जो बंदा फ्रीलांसिंग में अच्छे पैसे कमा लेता है, जिसके पास बैलेंस वगैरह बन जाता है, वो क्या करता है, अब वो इन्वेस्ट करता है अपने अपने आइडिया के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो स्टार्टअप वाले जो होते हैं ना, वो पहले फ्रीलांसर होते हैं और फिर स्टार्टअप की दुनिया में आते हैं। तो स्टार्टअप की दुनिया में जब आते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि यार ये जो बंदा फ्रीलांसर है, इसके साथ काम कैसे करना है। उनकी साइकी उस बंदे के साथ मैच करती है। उनको पता होता है कि यार हम भी बस 24/7 काम करने वाले लोग हैं, और ये भी 24/7 काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी साइकी मैच कर जाती है, उनको हैंडल करना आ जाता है। इस वजह से वो लाइक करते हैं। मगर जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, जो कि वेल नोन कंपनीज हैं, वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगी अपने किसी डिपार्टमेंट को कि वो फ्रीलांसर को हायर कर लें। अगर उनको पता चल गया कि एक बंदा फ्रीलांसर है, तो शायद वो उसको निकाल भी दें। तो ये लोकल कल्चर है, आई थिंक उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Osama, would you like to, say something on this? ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स का जो सीन है फ्रीलांसर्स को लेके, if you want to add your 2 cents to it, otherwise नहीं, नॉट मच, बट जिस तरह जो है इन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट इज डूइंग इन्वेस्टिंग इन द फ्रीलांसिंग स्पेस ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। और मैंने अपनी आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में यही बात की कि actually this is a very golden time for freelancing, because it's the era of remote work, era of co-working spaces. You know, आप देख रहे हो, it's really easy for people to uh, you know get a space at a co-working space, और थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, उनको सिर्फ अगर एक बंदा या दो बंदे भी बिठाने होते हैं तो वो स्पेस ले लेते हैं, वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं। आजकल तो लोग कैफेज वगैरह में बैठ के जो है अपना काम कर रहे होते हैं। कैफेज अल्टीमेटली भी अल्टीमेटली जाना तो हमें डिसेंट्रलाइज्ड वर्कफोर्स की तरफ ही है ना, हम exactly रिमोट that's वर्किंग the की future. तरफ ही जाए, तो That's the future. it's good that some of the companies are actually embracing it and doing Yes. it proudly. बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। वैसे पाकिस्तान में अगर आप 5-10 साल पहले चले जाएं, अगर कोरोना 5-10 साल पहले आ जाता, तो आई डोंट थिंक कि ये कंपनीज जो हैं वो रिमोटली जिन्होंने काम किया वो कर पाती, होती And इक्का Babar, I दुक्का। think it's doing a lot of wonders for the company too.
it's bringing flexibility to the workers, but it's also doing wonders for the company. So why not? Of course. या मोहम्मद, नॉट उसामा, मोहम्मद, अब तुम भाई वो ये बताओ मुझे कि मेजर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं बिगनर्स और एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स के लिए तुम्हारी नजर में? ओके, तो मेरा थोड़ा सा जो पॉइंट रहेगा वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शर्जील भाई के कुछ जो पॉइंट्स हैं उनसे इख्तलाफ भी करूंगा और उनको एंडोर्स भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, ये को वर्किंग स्पेस है, दैट इज द बेस्ट स्टेप कि आपको काम के लिए एक स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि आपको, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं एक फ्रीलांसर के, जो एक स्टार्टअप के, वो इतनी जल्दी मैनेज नहीं हो पाते। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिस, को वर्किंग स्पेसिस पर काम कर रही है। सेकंड थिंग जो मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है वो ये है कि आप क्वांटिटी को ना देखें, आप क्वालिटी को देखें। लेट सपोज अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो व्हाट इज द आउटपुट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा। आपने डीजी स्किल के प्रोग्राम पर मैसिव ऑफ लेवल में आपने कोर्सेज करवा दिए, स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे हैं। मैं खुद भी डीजी स्किल के वर्डप्रेस का कोर्स करता रहा हूँ। तो व्हाट इज द आउटपुट? क्या मुझे वहां पर जिससे कहते हैं मैसिव लेवल पर अर्निंग का मौका मिला? नहीं, वहां आपने पे कुछ प्रोफाइल शेयर कर उसामा, दी, दैट इज सॉरी गुड, तुम्हें कि इंटरप्ट कुछ करूंगा, जो सक्सेसफुल। वहां पे थोड़ी मिलेगी तुम्हें। वहां उनका काम तो तुम्हें सिखाना है, तुम्हें स्किल्स प्रोवाइड करना है, फिर ढूंढना तो हमारा मेरा काम है ना। अगर मैं बिल्कुल कोई कोर्स कर रहा हूँ देन आई हैव टू गो एंड सर्च फॉर वर्क ना। ये उनका वो आपको प्लेट में रख के तो नहीं देंगे। आई कैन सर, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखने की जरूरत है कि स्टूडेंट करना क्या चाहता है। अब एक स्टूडेंट को पहले यही नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है। लेट्स सपोज अब मैंने सुना फ्रीलांसिंग में, मैं अपने 10 लोगों को बताऊंगा, अपने सर्कल में बताऊंगा, वो भी फ्रीलांसिंग के अंदर आएंगे। अभी आप फाइबर के ऊपर देख लें तो 10 मिलियन जो है वो ट्रैफिक हो चुकी है फ्रीलांसर्स की। उसमें प्रॉब्लम क्या है? वहां पर क्वालिटी खत्म हो चुकी है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप फ्रीलांसिंग ना करें। फ्रीलांसिंग इज द नेक्स्ट स्टेप, फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर। लेकिन हमें उस सेक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने की जरूरत है कि आपने इस पे वर्क एथिक्स पर कैसे काम करना है। अब जैसे बात की जाए कॉर्पोरेट की लेवल की, कि कॉर्पोरेट लेवल में फ्रीलांसर्स क्यों हायर किए नहीं किए जाते, उसकी भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने एक जॉब में इंटरव्यू लिया एक स्टूडेंट का। ही वाज अ पीएचपी डेवलपर, और उसके बाद वो एपीआईज क्रिएट करते थे पीएचपी में। दैट इज अ मैसिव वर्क। तो वहां पर जब मैं उनकी फाइबर की प्रोफाइल देखी थी, ही वाज अ सेकंड जो है वो लेवल का सेलर थे फाइबर, हाँ, फाइबर के ऊपर। सो लेकिन वो मेरे पास जब जॉब करने आए तो उनकी डिमांड क्या है, 40 to 50 के। तो माइंडसेट भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड थिंग जो फ्रीलांसर्स की तरफ से होती है, मैं कॉर्पोरेट की तरफ भी आता हूँ। कॉर्पोरेट्स क्या प्रॉब्लम करती है वो तो वैसे सजील साहब ने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो फ्रीलांसर की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि वो पंचुअलिटी नहीं है। पंचुअलिटी एंड जिसे कहते हैं कि कमिटमेंट्स नहीं है। अब फ्रीलांसर्स का लेट्स वो, मैं किसी से प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ तो उसे क्या भरोसा है कि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट को जिसे कहते हैं ब्रीच नहीं करता। प्लीज साइलेंट कर दो, मोबाइल साइलेंट कर दो, पूरी पूरी ओके, आवाज डिस्टॉर्ट हो वो जाती है जब तुम बैकग्राउंड, फोन बज। सॉरी सॉरी। थैंक तो यू। प्रॉब्लम में ये था कि, थैंक यू। तो प्रॉब्लम में ये होता है हमें कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हो जाए तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट को नुकसान पहुंचता है। सो उन चीजों को अभी गैप्स को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, उनको ब्रिज को रिमूव करने की जरूरत है, तभी हम इस इकोसिस्टम को आगे लेके चल सकते हैं। दैट वाज चलो ठीक है, अच्छा, मैं गुड मैं यहाँ पॉइंट। पे सिर्फ एक कमेंट करूंगा जो सामने बात करी उस पे कि ये बात बिल्कुल ये है कि जो उन्होंने बात कही ना कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि यार फ्रीलांसिंग करनी भी है या नहीं करनी। वहाँ पे हमारे पास फिर बहुत डिफरेंट एक टॉपिक आ जाता है, करियर काउंसलिंग का। आई थिंक हम लोग को एक चीज से अवेयर रहना है दैट वी डोंट ग्लोरीफाई द टर्म फ्रीलांसिंग, क्योंकि ऐसा है काफी लोगों के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं कहीं पे ये होता है कि भाई घर बैठे पैसे कमाओ, क्या है फ्रीलांसिंग। सो द थिंग इज के पॉन्जी यू नो स्कीम्स। इस एग्जैक्टली इस कचरे से थोड़ा सा जो है ना हम लोगों को बचाना है यूथ को, बिकॉज इन चक्रों में पड़ के फिर they are not meant to become a freelancer, but they force themselves and push themselves into that phase. So I think ये एक बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा उसामा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही से था। शजील भाई, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें, या
I should move on. you can continue. अच्छा उसामा, ये जो हमारे बाबे हैं, मैं इन लोगों को बाबे बोलता हूँ, बाबे जो हैं वो बूमर्स और जनरेशन एक्स जो है, अब नथिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन उनको रियलाइज कराने की कि भाई पोटेंशियल क्या है गिग इकोनॉमी की, उसमें बड़ा मसला हो रहा है हमारे यूथ को, ठीक है, एंड दे आर नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू परस्यू अ करियर इन फ्रीलांसिंग। वो समझते हैं कि घर पे बैठे बैठे जो है जंग लग जाएगा इसको, मतलब ही वुड बी नो गुड। उस माइंडसेट को, उस पर्सपेक्टिव को किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं कि उन लोगों को ये बात समझ में आए कि यार if a guy is earning good via freelancing, he's ready to marry, मतलब he can get whatever he wants, if he wants to marry he can, मतलब कि यही होता है ना हमारा मेन गोल तो जिंदगी का, पाकिस्तानी लोगों का तो यही है कि शादी कर लें, एक घर ले लें, एक गाड़ी हो जाए आपकी, these are our goals। एक पाकिस्तानी एवरेज बंदे के गोल्स ये हैं कि वो चाहता है कि मेरी अपनी ये सारी चीजें मेरे पास हों, तो they should realize कि he can do all of this। जैसे वो कॉर्पोरेट जॉब में ये कर सकता है सब कुछ, वो वैसे ही वो फ्रीलांसिंग से भी कर सकता है। किस तरह समझाएं इन लोगों को, ये बैठ के समझा के देखिए, how do you think we can convey this to them by proving ourselves, yeah, what यस बाबर, यार ये जो लाइक तुमने इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो ना वो मुझसे पूछा, तो आई थिंक इट्स, पहली तो ये बात है कि इट्स नॉट इजी एट ऑल, there's a huge generation gap यार, there's a huge gap, it's not easy। boomers जिन्हें हम कहते हैं, like they belong to the age bracket of around I think 50s to 70s, and to 60s, yes, to 60s, and I think it's आप ये अगर समझ रहे हो कि आप बैठ के जो है वो अपने वालिदा और वालिदैन के साथ बेसिकली अपने वालिदैन के साथ बैठ के जो है उनको समझाओगे, तो it's not gonna work, to be honest। It might work for a short period of time, but as I said, it's a huge generation gap। ये चीज़ जो है वो रूट लेवल से आपको एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू डू इज gradually raise awareness at our homes। I don't really completely feel कि government level पे या एक बहुत ही बड़े लेवल पे इसकी अवेयरनेस जो है वो इतना फ़ायदा करेगी, बिकॉज हमारे ये भी होता है कि हमारे घर इस तरह के होते हैं कि वो अपने घर से घर मतलब रखते हैं, और क्या कहते हैं वो ये नहीं बोलते, कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई वो अपने लिए कर रहा है, तुम्हें क्या है, हम तो नहीं करते ना, मैं जो हूँ क्या कहते हैं अब्दुल समद के बारे में क्यों जो है वो सुन रहा हूँ, उससे मुझसे मेरा क्या लेना देना। सो आई थिंक एक बात तुमने सही करी, a few hacks would be to give them what they want to see, build that trust with them, and let them know that yeah, my decisions work। If you have a poor record of your decisions, then I think it would be a very very tough job for you to make them realize that yeah, you should trust me with this। So I think your decisions matter yahan pe। You need to build some trust, you need to give them what they see, and give them what they want to see ka matlab hai results, give them a reason to believe in। and yahi pe main like, why is this better, where the world is moving towards to, and yahan pe tumhari wali baat second karunga कि basically when it comes to boomers तो नहीं, मतलब mostly लोग जो है वो ये करते हैं, they look at the results, they don't look at the process। so और especially हमारे जो ये generation है बाबे, as you said, उनको अगर वो आपको हो सकता है 2 दिन गालियां दे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद उनको उसका रिजल्ट दिखा दो तो वो शायद तुम्हें बोले कि बेटा अब तुम यही करोगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। so I think that's the thing। I think and it also depends, many parents say कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि यार तुम्हें जॉब करनी है, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि यार एनडी में एडमिशन होगा तुम्हारा, भले एनडी जैसी भी है जो भी है एनडी में होगा, कुछ भी हो जाए, जबकि उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन नहीं एनडी। सो इस तरह के भी पेरेंट्स हैं जो बोलेंगे कि
भले फ्रीलांसिंग बेहतर है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं तुम जॉब करोगे, मैं तुम्हें एक ऑफिस में देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सूट वूट में उसमें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं देखना चाहता कि तुम शॉर्ट्स में बैठ के जो है वो घर पे काम कर रहे हो। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई तू जो भी कर ले, you just have to pay the bills. So it depends on the culture at home too. So I think short answer इसका यही होगा कि I think you need to give them results. If you show them the results, if you make smart decisions, make it look good and flashy. uh, One of the few hacks ये हो सकते हैं कि you make your own business card. You tell them success stories. You know, decorate your workspace at your home and show them कि मैं freelancing नहीं कर रहा, मैं अपना business कर रहा हूँ. So इन चीज़ों से जो है वो हम as I said gradually कर सकते हैं. आप अचानक से उनके ऊपर ये थोपोगे तो we can't really blame them because huge generation gap again. So yeah, results. Nicely explained, Osama. बहुत वैसे tricky question था, as you mentioned, but you did well. Shajiv, would you like to say something? I'm going towards the closing of the show. यस आई कुछ थिंक बोलना चाहें? ही इज एग्जैक्टली राइट कि जब तक आप उनको कोई चीज़ नहीं ना दिखाओगे कि यार ये मैंने प्रोड्यूस किया है, जो मैंने टाइम स्पेंड किया है घर में बैठकर काम करते वक्त, तो तब तक वो इम्प्रेस नहीं होंगे। और जब वो इम्प्रेस हो जाएंगे तो तब वो आपको यही कहेंगे कि यार लगे रहो, बस यही करो और कुछ ना करो। तो यस आई थिंक वेरी गुड सेशन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और टेक टीवी के ये इंटरव्यूज तो आते रहते थे, मैं मिस करता रहता था। अब फ्यूचर वाले जो हैं वो मैं कोई भी मिस नहीं करूँगा, सभी देखूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओसामा, कुछ बोलना चाहेंगे इस बात पे, इस वाले पॉइंट पे, या क्लोज करें शो? सर आई वंडरफुली एग्री विद मोहम्मद सर उसामा दैट विल बी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इन चीज़ों को कि जो गैप है वो जनरेशन गैप तो रह सकता है क्योंकि एक मैसिव सर चेंज सर आया है। नहीं है यार, वो जवान बच्चा है यार, तुम उसको सर कह रहे हो यार। ऐसे नहीं करो यार। चलो कोई इशू नहीं, बाइक कहते हैं। सो मैं बस टोटली एग्री करूंगा क्योंकि फर्स्ट थिंग यू हैव टू कम अप विद समथिंग कि आप उनको कुछ दिखाएं तो सही कि वो आपको अप्रूव करें, दैट्स इट। चलो यार, it was nice having you guys. Thank you for taking out time for this, your precious time. सब जो है वो कितना busy है, tight schedule चल रहा है आजकल कोरोना की वजह से वैसे. जो I बात है. thank all of you for attending this. और मैं I would like to request you guys कि जितने भी developer दोस्त हैं ना, जो डेवलपर्स हैं, प्लीज इनवाइट देम टू माय ग्रुप. ये इल्तिजा है हाँ छोटी sure. सी. सो व्हाट इस कम्युनिटी क्रिएट करने के पीछे रीजन ये है कि आई वांट टू यूनिफाई ऑल द एग्जिस्टिंग ग्रुप्स. ये जो अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज गूगल डेवलपर्स कम्युनिटी जो है, फेसबुक डेवलपर्स कम्युनिटी है, बहुत सारी हैं. AWS की अलग है, IBM की अलग है, माइक्रोसॉफ्ट की अलग है. आई वांट them to be unified on a single platform. सब अपना अपना अलग अलग जो है ना, छोटी छोटी वो बना के अपनी उसमें अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. Why not on a single platform? Don't come here for a monetary value or something. Just come here for networking, sharing ideas, opportunities, and everything. That's the idea behind it. So best of luck for all your future endeavors. It was nice having you. Thank you. Bye Thank you bye. so much, brother. Thank you चलें, so बाय much. बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।